Good morning, everyone. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Okay, good morning. So, yesterday we had covered up composite sailing. So, I told you about how we calculate composite distance and initial and final courses. So, today we will be continuing on that. So, there are some special cases in composite sailing which we will be doing today. And once those are done, after that, there are some doubts of the candidates. So any doubts which are there, then those will be covered up. That's the plan for today. And if we are able to cover up both these topics, the special cases as well as the doubts, so then we will move to our new topic. You had requested me to take up a star suitable for sight and star identification. So those topics can be taken up then. So that's the plan for today. So let me first tell you about a special case in composite sailing. And once we have done that, then whatever doubts you are having, we will go to those doubts and sort them out one by one. Okay, beta. So today we are going to do a special case in composite sailing. Now we have done a basic composite sailing question. In a basic composite sailing question, they usually give us two positions and the limiting latitude. And then they tell us to find out the composite distance and the initial and final courses. So the method which we deploy to calculate this, we basically, first of all, we make this diagram. Now we mark the limiting latitude here. So let's mark the limiting latitude in red. Then what we do is, from our initial position up to the limiting latitude, we draw a great circle track. Now this is such a great circle whose vertex lies on the limiting latitude itself. So initial position is A, final position is B, and this vertex of the first leg of our composite track, we call it V1. The same thing is done at the destination also. So from the destination up to the limiting latitude, we draw a great circle track such that its vertex lies on the limiting latitude. We name it vertex 2. So once we have this diagram, this is where the pole is on the top. Then we can join PV1 and PV2. So PV1 and PV2 is joined. And we have three triangles now in front of us. So we solve these three triangles using Napier's rule and using parallel sailing. We can find out the total composite distance, and we can also find out the initial and final courses. Now the special case which I am talking about, that special case is if one of the ports, either the departure port or the destination port, port A or port B, happens to lie on the limiting latitude itself. Okay.
Let us say they have given you port A, latitude is 30 degrees north and longitude is 20 degrees east. This is the latitude and longitude of port A. Then they tell you port B, destination port, latitude is 40 degrees north and longitude is, let us say, 80 degrees east. Then they give you the limiting latitude and you see that the limiting latitude is also 40 degrees north. So now you see the latitude of our destination port, port B, is matching with the latitude where we have to limit our track or the limiting latitude. So both are at 40 degree north parallel of latitude. So how do we do this kind of question? Now basically what this means is that our destination B is somewhere on the limiting latitude, somewhere on the red line. Where it is, we don't know. Okay, it can be anywhere, but it is lying somewhere on this limiting latitude. So this is a special case. One of the ports latitude matches with the limiting latitude. So let us see how will we do this type of question. Now the diagram will get modified here. Since our destination port is at the limiting latitude itself. So let me modify the diagram now. Let's erase the unnecessary items here. Let us draw the limiting latitude. Our destination now lies on the limiting latitude itself. So point B will be somewhere on the limiting latitude. So let us draw point B here. Let's call this as our destination port, B. So this is how the diagram is going to look like now. There will be only two triangles here. The third triangle will be missing because when you go from A to vertex 1, A to V1, and you reach up to your limiting latitude here, then you start moving on the parallel track, on the red color track. Moving on the parallel track itself, you are going to reach your destination. That is the point B. Now, beta, if you carefully look at these two diagrams, So without further beta, other people can please mute their mic. Okay. So if you see here, beta, there are two diagrams here. So the first diagram PAV and the second diagram PPV. Now, out of these two diagrams, if you carefully look, the triangle PBV is not a spherical triangle. Okay. Why it is not a spherical triangle? Because the red color side, the limiting latitude side, Bravo vector, is not a great circle. It is a small circle. Why it is a small circle? Remember, other than the equator, all parallels of latitude are small circles. So in this PBV triangle, the red color side, Bravo vector side is a small circle. So this is not a spherical triangle. If you look at the other triangle, that is PAV, Papa Alpha Vector. Now this triangle is a spherical triangle. All three sides are great circles. Now in doing these type of questions, what we do is we first solve triangle PAV, which is a spherical triangle. And when we solve this triangle, we know this angle at the vertex, angle V, is 90 degrees. And this is a special spherical triangle. And we can use the Napier's rule to solve it. So for Napier rules, you require two things.
other than the 90-degree part. The two things which we require here are, number one, we have side PA known to us. PA is the colat of our starting position A. So it is the colat of A, or 90 minus latitude of A. The second side which is known to us, the second part which is known to us is Papa Victor, side PV. This Papa Victor or PV side is the colat of our limiting latitude. The limiting latitude is given to us in the question. So this side is also known to us. Now, important thing comes here. When we solve this triangle, the first item which we find out, the first item which we solve in this triangle is this angle P. So we enter with Napier rule. We know two parts other than 90-degree part. So with Napier rule, the first thing which we find out is this angle P of the spherical triangle. Now, why do we find this angle? When you find this angle basically gives you the D long between alpha and vector A and B. You can see it is the angle at the pole contained between the meridian of A and the meridian of vertex. So this gives us the D long between alpha and vector. So once we have this D long known, we can easily calculate the longitude of the vertex. We already have the longitude of A given to us. Longitude of our starting position is given to us. So when we apply this angle P or the D long, we can easily find out the longitude of the vertex. The longitude is important. Why the longitude is important is, I will tell you a little later why this longitude is very important in these questions. Now, once you have this longitude, you compare the longitude of the vertex with the longitude of your destination, that is Bravo point, B point. The longitude of B, our destination, is given to us in the question. When you compare the longitude of the vertex with the destination point, you come to know whether this triangle which you have made is right or it needs to be modified. Okay. Now, why I'm saying that the triangle may need to be modified, the reason for that is the location of this B point or the location of the vertex is not known to us. We are trying to find out these points. We only know that these 2 points lie on the limiting latitude. That's all. So both of them should be there on the limiting latitude, but there is a possibility that the vertex may lie on this side of B. Okay, there is a possibility that this great circle track which we are making from alpha to Victor may touch the limiting latitude somewhere here. Okay, now in the triangle, we have considered that the vertex is in between A and B. But as I told you, there is a possibility that the vertex may lie outside the triangle. Now, if the vertex is lying outside the triangle, let us say if the vertex is here, then in that case, the diagram simply tells us that if we follow a great circle track from A to B, okay, let me make it with a different color. Let's use yellow. So this simply tells us that if we draw a great circle track from A to B like this, alpha to Bravo, then this track is not going to cross the limiting latitude at all. So in other words, if the vertex lies outside this triangle, PAB triangle, it tells us that composite sailing is not required in this question. So this possibility can be there in these questions. And the possibility is ruled out or known only by finding the longitude of the vertex. Okay, so if the vertex come outside the triangle, what we have to do is we have to just write a remark
that since the vertex lies outside the triangle PAB, composite sailing is not required in this question. And if we follow a great circle track, we will never be crossing the limiting latitude. And after that, you can simply make a PAB triangle and you can solve it by great circle sailing only. By using the cosine formula, you can solve the PAB triangle. So this is option number 1. Now option number 2 is that when you calculate the longitude of the vertex, you come to know that the vertex lies inside the PAB triangle. So let me erase the outside portion now. The vertex is lying inside the triangle. If the vertex lies inside this triangle PAP, then everything is fine. We have to do composite sailing. So we continue solving the PAB triangle by Napier's rule. What we do is, the number 1, we have calculated this angle P. So let me write number 1 here. Then after that, number 2, again you will apply the Napier's rule and you can find out side AV. And you can again apply the Napier's rule, and number 3 item, you can find out angle A. So once these 3 are known, now you have the longitude of the vertex also. So this longitude of the vertex is now known to us. So what we do is we find out this angle P now. This yellow color angle P is basically the angle at the pole contained between the meridian of the vertex and meridian of point B. So this is the D long between vertex and Bravo. Longitude of the vertex is known. Longitude of our destination, that is the Bravo point, is given to us in the question. So we can easily find out the D long between them now. Now, once you have this D long, you can calculate distance Victor Bravo. Okay, this is calculated using parallel sailing, exactly as we did in our composite sailing question. So this is calculated as departure, which will be equal to D long into cos of m lat. So this is item number 4, which we will be calculating. And once this is done, the question is solved. If you add up 2 and 4, it will give you the total composite distance between A to B, alpha to Bravo. And using the angle A, which we calculated at number 3, using this angle, you can follow the 1, 2, 3 method and you can find out what was our initial course. The final course is easy to obtain here. You don't need to do any calculation at all. The final course after you cross the vertex, the course is going to be 090 in this case. You are going in the easterly direction here. So if you are going in the easterly direction, the final course will always be 090. And if you are going in the westerly direction, the final course is always going to be 270. So final course is easy to calculate. This angle will all be 90 here, because red color line is the parallel of latitude and blue color line Papa Bravo is the meridian of point B. They will always cut at a right angle. So final course is going to be 090. So just to give you a recap, what we have done is, in these questions, the specialty is, or the typical part which is given is, limiting latitude could be equal to the latitude of port A or port B, departure or destination port. Now, if that happens, we will have only 2 triangles. Out of these 2 triangles, one will be a spherical triangle and the second one would be a non-spherical triangle. So we first pick up the spherical triangle and we solve it using the Napier's rule. We find out angle P of the spherical triangle, the red color angle which you see here. Why we are finding this angle P? Because we want to obtain the longitude of the vertex first. Now, once the longitude of the vertex is obtained, we know whether this triangle or whether this diagram which we have made is accurate or not.
because there is a possibility that the vertex may lie outside the triangle PAB. So if it is so, immediately when you calculate the longitude of the vertex, you will come to know that the vertex has to be made outside the triangle. Now, if the vertex goes outside the triangle, the longitude is such that you need to keep the vertex outside. Let us say in this question, longitude of B is 80 degrees east. Now, if this question, in this question, the angle P comes to be 70 degrees. I'm just taking an example. If angle P, the red color angle, comes to 70 degrees, you know longitude of A is 20 degrees east. If you apply a D long of 70, longitude of vertex becomes 90 degrees east. If it is 90 east, we know it has to go on the right side of the P point. So we immediately know the vertex has to lie outside. If it lies outside, there is no composite sailing required, because if you sail along a great circle track from A to B, you will never be crossing the limiting lat in that case. So you simply write a remark, since vertex lies outside the triangle, composite sailing not required. So we will solve the triangle using great circle sailing using the cosine formula only. No vertex is required then. You follow the great circle sailing method, use the cosine formula, and you can calculate the distance AB and the initial and final courses. If vertex lies inside triangle PAB, then we follow the composite question method. We find out item number 2, that is alpha vector. We find out item number 3, that is angle A, and we find out item number 4, which is Bravo Victor or Victor Bravo side. And once we have these, we can easily calculate the total composite distance, which is number 2 plus number 4 here, alpha vector distance, great circle distance, plus Victor Bravo, the parallel distance. And angle number 3 or angle at A gives us the initial course using the 1, 2, 3 method. So this is the typical question which can come in a composite sailing problem. Okay. So beta, now any doubt which you are having in this special kind of question, typical question, you can share with me. सर इसमें एक चीज पूछनी थी कि जो एंगल ये पता करने के लिए कि वर्टेक्स अंदर लाई कर रहा है कि बाहर लाई कर रहा है, तो जैसे आपने बोला कि वी कैन कैलकुलेट एंगल पी एंड वी कैन चेक द लॉन्जिट्यूड वेदर द वर्टेक्स इज लाइंग आउटसाइड और इनसाइड, तो सिमिलर वी कैन कैलकुलेट एंगल ए एंड बी आल्सो एंड दैट वे आल्सो वी कैन चेक ना, जो नॉर्मल मेथड यूज करते थे। बेटा उसकी एक डिसएडवांटेज है, आप जो बोल रहे हो दैट्स परफेक्टली राइट। व्हाट यू आर सेइंग इज कि अगर हम PAB ट्राइंगल बना दें, लेट अस से दिस इज PAB ट्राइंगल, और हम ये ग्रेट सर्कल ट्रैक बना दें यहाँ पे, और ये दोनों एंगल्स को चेक कर लें। हाँ सर, इन दोनों एंगल्स को अगर हम चेक कर लें तो भी हमें पता चल जाएगा कि वर्टेक्स अंदर है या बाहर है। दैट्स वेरी राइट, हमें पता चल जाएगा। पर इसमें एक डिसएडवांटेज है बेटा। डिसएडवांटेज क्या है वो मैं अभी बताता हूँ आपको। डिसएडवांटेज इज कि क्वेश्चन में उन्होंने आपको लिमिटिंग लैटिट्यूड दिया है। ओके, तो आवर फर्स्ट लाइन ऑफ अप्रोच शुड बी कि इस क्वेश्चन में कंपोजिट सेलिंग हो रही है। हमें पहले ये अज्यूम नहीं करना है कि ग्रेट सर्कल सेलिंग हो रही है, हमें ये अज्यूम करना है कि कंपोजिट सेलिंग हो रही है। एंड इन अबाउट 90% ऑफ द क्वेश्चंस व्हिच कम लाइक दिस, कंपोजिट सेलिंग इज हैपनिंग। जो ये वर्टेक्स बाहर आने का स्कोप है, दैट इज ओनली इन अबाउट 10% ऑफ द क्वेश्चंस व्हिच कम। And our first approach should be that composite sailing is happening. Why? Because they have given us a limiting latitude. अब ये भी डाउट माइंड में आ सकता है कि भाई पहली अप्रोच यही क्यों होनी चाहिए। एक तो उसका रीजन है कि उन्होंने हमें लिमिटिंग लैटिट्यूड क्वेश्चन में दिया है, सो वी हैव टू स्टार्ट विद द अजम्पशन कि अगर उन्होंने लिमिटिंग लैटिट्यूड दिया है तो हम ये मान के चलेंगे कि कंपोजिट सेलिंग हो रही है। दैट्स वन रीजन। सेकेंड रीजन इज, मान लो आप ये ट्राइंगल बनाते हो PAB ट्राइंगल, और ये दोनों एंगल आप निकालते हो
और इनमें से एक एंगल जो है ऑब्ट्यूस आ जाता है, लेट अस से एंगल बी ऑब्ट्यूस आ गया। अब एंगल बी ऑब्ट्यूस आया तो वर्टेक्स चला गया बाहर, राइट। तो अब आप क्या करोगे, अब आप सिंपली ये ए बी डिस्टेंस निकाल लोगे और वो डिस्टेंस को आंसर में लिख दोगे, करेक्ट। यस सर। आपको पता चल गया कि भाई इसमें कॉम्पोजिट सेलिंग तो होनी नहीं, तो आपने सीधा ए बी डिस्टेंस निकाला और अपने आंसर को लिख दिया। ये जो एंगल निकाले थे इनसे आपके पास कोर्सेज आ गए। सो यू कंप्लीटेड योर क्वेश्चन क्विकली, आपका क्वेश्चन जल्दी खत्म हो जाएगा। जो बंदा इस मेथड से सॉल्व कर रहा है वो पहले तो वर्टेक्स की लोकेशन निकालेगा, फिर वर्टेक्स बाहर आएगा, उसके बाद वो यही काम पूरा का पूरा जो नीचे आपने किया है उसको करेगा, तो उसे ज्यादा टाइम लगने वाला है। तो इट लुक्स एडवांटेजियस कि अगर वर्टेक्स बाहर आ जाए तो ये क्वेश्चन तो बड़ी जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ओके अब बेटा एडवांटेज एज आई टोल्ड यू विल हैपन ओनली इन 10% ऑफ द क्वेश्चन, इन 90% ऑफ द क्वेश्चन दिस विल बी ए डिसएडवांटेज, क्योंकि अगर आपका वर्टेक्स अंदर आया तो फिर आपको वापस से ऊपर वाली ट्रायंगल बना के इसको दोबारा से करना पड़ेगा सारा। दैट्स वन। एंड नंबर 2 इज, मान लेते हैं कि आपका वर्टेक्स बाहर भी आ गया और आपने ये सवाल क्विकली कर भी दिया। अब जब पेपर चेकर आपका पेपर चेक कर रहा होगा उसके माइंड में सबसे पहला डाउट ये आएगा कि भाई क्वेश्चन में तो हमने लिमिटिंग लैटिट्यूड दिया था पर आपने सीधा इसे ग्रेट सर्कल की डायग्राम बना के सॉल्व कर दिया है। नाउ हाउ डिड यू कम टू नो दैट दिस इज नॉट ए कॉम्पोजिट क्वेश्चन एंड इट इज ए जीसी क्वेश्चन? क्वेश्चन में तो लिमिटिंग लैट दिया हुआ है उन्होंने आपको। सो दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू हॉन्ट हिम कि भाई ये बंदे को कैसे पता चला बिना वर्टेक्स की लोकेशन निकाले कि इस क्वेश्चन में कॉम्पोजिट सेलिंग नहीं हो रही है। और सीधा डाउट उसके माइंड में जो ये जाएगा वो ये जाएगा कि भाई आपने किसी से ये कॉपी मार लिया है। सो फॉर दीज 2 रीजन वी डू नॉट स्ट्रेट अवे गो इनटू जीसी सेलिंग, वी ऑलवेज start with composite and go to GC only if required. Okay sir. सर लेकिन वर्टेक्स एंड लिमिटिंग लैट दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो अगर हम जैसे अगर ए बी को डायरेक्ट ज्वाइन करके वर्टेक्स निकालते हैं तो इज इट नेसेसरी कि वो 40 डिग्री नॉर्थ पे ही आएगा, वो ऊपर भी तो आ सकता है ना सर? बेटा कहीं भी आ सकता है, वर्टेक्स कहीं भी आ सकता है। अगर आप ए बी को ज्वाइन करते हो तो आपका वर्टेक्स जो है ये कहीं भी आ सकता है, एनी लैटिट्यूड इट कैन कम। तो सर अगर हम ए बी निकाल के वर्टेक्स डिसाइड करते हैं कि अंदर है कि बाहर है, और अगर वो 40 डिग्री नॉर्थ पे ही नहीं है तो हमारा पर्पस ही डिफीट हो गया ना सर? आपने ए बी बनाया, सेकंड मेथड फिर यूज ही नहीं कर सकते ना। आपने बेटा पीएबी ट्रायंगल बनाया, सबसे पहले आप ये बना रहे हो या कॉम्पोजिट वाली डायग्राम बना रहे हो? लेट्स से सर अगर हम लोग कॉम्पोजिट से नहीं करते और लेट्स से हम लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोग ए और बी निकाल के फिर वर्टेक्स निकालेंगे फॉर एग्जांपल, राइट ठीक और है, हमारा वर्टेक्स लेट्स से सेंटर में भी आ जाता है कि ट्रायंगल के अंदर है, राइट, लेकिन उसका लैटिट्यूड हमको नहीं पता, फिर हम अगर लैटिट्यूड निकालते हैं तो वो 40 डिग्री से ऊपर आ जाता है फॉर एग्जांपल। या दैट्स राइट। तो सर ये फिर तो गलत ही होगा, फिर तो ऐसा कर ही नहीं सकते, हमको करना ही पहले तरीके से करना पड़ेगा। दैट्स राइट। अगर आपका वर्टेक्स ए और बी के अंदर आता है फिर तो गड़बड़ हो गई ना बेटा, फिर तो जीसी हो ही नहीं सकता यहाँ पे, फिर तो कॉम्पोजिट ही होगा। ओके क्योंकि अगर आपका वर्टेक्स अंदर आ रहा है ना, वर्टेक्स इज द हाईएस्ट लैटिट्यूड पॉइंट, बी का लैटिट्यूड 40 है, अगर वर्टेक्स अंदर आ रहा है तो इसका मतलब है कि वर्टेक्स का लैटिट्यूड इज मोर देन 40। अगर वर्टेक्स का लैटिट्यूड मोर देन 40 है तो आपका लिमिटिंग लैटिट्यूड वाली कंडीशन तो मीट ही नहीं हो रही। सो इन दैट केस डूइंग इट बाय जीसी विल बिकम रॉन्ग, सो वी कैनॉट डू इट बाय जीसी देन। हम वर्टेक्स अंदर आने पे इसे जीसी से कर ही नहीं सकते, वी विल हैव टू गो बैक टू द कॉम्पोजिट ट्राइंगल जो ये हमने ऊपर बनाई है, और इसे हमें कॉम्पोजिट मेथड से करना पड़ेगा। ओके सर। ओके ओके, और बताओ बेटा, और कोई डाउट आ रहा है इसमें? एनी अदर डाउट? आया हुआ क्वेश्चन है सर ये तो।
ओके सर एक क्वेश्चन पूछना था, मतलब ऐसे पास पेपर्स में था कि उसमें जीसी ट्रैक दिया हुआ है और उसमें बोला हुआ है कि ट्रैक के मिड पॉइंट की पोजीशन निकालो। ओके ओके तो बेटा पहले तो इसको क्लोज आउट कर दें. शैल आई क्लोज इट आउट? If you want, you can take a screenshot of this and let me erase the unnecessary parts. कर लिया सर, ड्रॉ कर लिया. Okay, very good. So if you have drawn, perfect. Okay, if you want to take a screenshot, you can take a screenshot and keep it with you. It will help you to give you a stepwise procedure के कैसे हम इसे करते हैं. Number 1, number 2, number 3, number 4. This is how we do it. So this is done now. So shall I close this out, बेटा? मैं बंद कर दूं? सर एक सेकेंड, ये डायग्राम में जो मेरा डाउट है वो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि फिर सर जैसे इसमें वर्टेक्स भी लिमिटिंग लैटिट्यूड पे एक सर्टेन हाई लैटिट्यूड पे कर रही है, ठीक है. मैं कल एक क्वेश्चन ट्राई कर रहा था, तो उसमें बोला था कि पॉइंट ए टू पॉइंट बी जा रहे हैं, तो कह रहे हैं कि फाइंड द पोजीशन इन बिटवीन विच फॉल्स ऑन द इक्वेटर. तो उसमें इक्वेटर पे लैटिट्यूड तो ठीक है 0 डिग्री हो गया, तो आई जस्ट हैड टू फाइंड आउट द लॉन्जिट्यूड, ठीक है. Right. तो उस केस में जो px होता वो 90 डिग्री हो जाएगा ना. That's right. तो मैं उसको साइड 90 डिग्री हो जाएगी, तो मैं उसको क्वाड्रेंटल वाले फॉर्मूले से कर सकता हूँ ना. Yes, yes, yes. Why not? You should do it with quadrantal. तो मेरा 0.3 0.4 का एरर आ रहा था कम से कम, तो दैट्स व्हाई फिर मैंने सोचा कि इसमें करना है, क्योंकि आपने कोई भी एग्जांपल ऐसा नहीं कराया था जिसमें क्वाड्रेंटल फॉर्मूला यूज हो रहा हो. No problem, बेटा. अभी इसको यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं. One by one आपके जो भी डाउट्स हैं ना, let me draw those doubts. Okay, let's keep this also. मैं दूसरा एक व्हाइट बोर्ड और ओपन कर लेता हूँ. ओके, तो वन बाय वन बेटा अब मैं आपके डाउट जो है वो लेता चलूंगा. जो अभी आपने बताया है क्रॉसिंग द इक्वेटर, पहले इसे ले लेते हैं. तो बेटा यू आर गोइंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ और साउथ टू नॉर्थ? बेटा क्रॉसिंग द इक्वेटर साउथ टू नॉर्थ हेमिस्फीयर और नॉर्थ टू साउथ हेमिस्फीयर? कोई भी ले लो सर, फंडा क्लियर हो जाएगा. सर साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ. ओके, वेरी गुड. एंड ईस्ट टू वेस्ट जा रहे हो या वेस्टर्ली डायरेक्शन, ईस्टर्ली डायरेक्शन? ईस्टर्ली सर, ईस्टर्ली. ईस्टर्ली डायरेक्शन में जा रहे हो. एंड साउथ टू नॉर्थ. ओके, लेट मी ड्रॉ द डायग्राम. इट वुड लुक समथिंग लाइक दिस. Let us say equator बना देते हैं यहाँ पे. So equator is in between here. So let's consider this as equator. This red line is the equator. हम जो travel कर रहे हैं, we are moving like this from this position A to this position B. This is the pole. This is our starting position A. This is our destination B. This is the point which they want us to find out, right? अब इस केस में हमने क्या करना है, सीधा P to X ज्वाइन कर देना है. तो when you join P to X, अब आपके पास दो ट्राइंगल आ गई, PAX and PBX. आप इनमें से कोई भी ट्राइंगल पिकअप कर सकते हो. Important thing to know here is that this PX side is 90 degrees. This is how a 90 degree side is shown. So अब ये PAX triangle or PBX, whichever you want to take, this becomes a special spherical triangle. And इसमें हमें सिर्फ दो चीजें और चाहिए other than the 90 degree part. So which two things are known to me? Let's see. One thing which is known is Papa Alpha. This is the colat of A. In this case, it will be 90 plus latitude of A. Pole to equator, pole to red line would be 90. And since A position is in the other hemisphere of the whose pole we have taken, so it will be 90 plus latitude of A. So ये PA हमारे पास है साइड, it is already known. दूसरी चीज हमने एंगल A इसको कैलकुलेट किया है for finding our initial course. So these two things are known to us. Now using these two,
we can easily find out by Napier's rule what is this angle P. तो ये angle P हम ढूंढेंगे and this angle P is the D long between alpha and X ray, A and X. So once this angle P is calculated, you apply this D long to the longitude of A and you can find out the longitude of X. So this is how it will be done. इस केस में आपको वर्टेक्स निकालने की जरूरत नहीं है, not required. So sorted out बेटा, this doubt is clear? Yes sir. सर ये एंगल ए कैसे आया सर? बेटा ये तो जो नॉर्मल ग्रेट सर्कल क्वेश्चन हम करते हैं उसमें इनिशियल और फाइनल कोर्सेज फाइंड आउट करते हैं. So the same way this angle A and angle B we find out using cosine formula. ओके सर. Okay. कॉम्पोजिट वाले केसेस में भी सर एंगल एक कोसाइन फॉर्मूला से निकाल लेंगे ना सर? नहीं बेटा, कॉम्पोजिट में एंगल ए कोसाइन से नहीं निकलेगा. कॉम्पोजिट में जो पहली ट्रायंगल बनती है इज लाइक दिस PAV ट्रायंगल एग्जैक्टली. इसमें एंगल ए कोसाइन से नहीं निकालेंगे हम, बिकॉज हमारे पास ये तीनों साइड तो नहीं है ना बेटा. तो इसमें हम नेपियर रूल लगा सकते हैं स्ट्रेट अवे. वी हैव दिस एंगल एज 90 डिग्रीज. तो PAV ट्रायंगल में हम नेपियर रूल अप्लाई कर देंगे. फिर उस हिसाब से फिर एंगल ए का फिर नेपियर रूल के फॉर्मूले से निकालेंगे. यस, दैट्स राइट. ओके. Okay. So this equator crossing is okay, huh? Shall we proceed to next doubt then? Yes sir. Okay. So Knowing के बता दूसरा कौन सा था? say सर वो again. मिड पॉइंट वाला बता दो सर. अच्छा, मिड पॉइंट. ओके बेटा एक बार दे हैव गिवन यू 2 पोजीशन ग्रेट सर्कल सेलिंग. यस, ग्रेट सर्कल एंड 2 पॉइंट पोजीशन दी हुई है. ठीक है बेटा, लेट्स से हमने अपनी PAB ट्रायंगल बनाई एंड दिस इज आवर PAB ट्रायंगल. नाउ नॉर्मल क्वेश्चन जो है उसमें हमें वो बोलते हैं फाइंड आउट द ग्रेट सर्कल डिस्टेंस बिटवीन देम. उसके लिए हम AB साइड को फाइंड आउट करते हैं. वी अप्लाई द कोसाइन फॉर्मूला. फर्स्ट थिंग विच वी फाइंड इज साइड AB. फिर उसके बाद हम एंगल A को निकालते हैं और एंगल B को निकालते हैं. एंगल A एंड B गिव अस आवर इनिशियल एंड फाइनल कोर्सेज. तो अब उन्होंने हमें एक पॉइंट भी पूछ लिया है. दे वांट अस टू फाइंड द मिड पॉइंट. ओके, लेट अस अज्यूम कि ये A to B जो हमारी साइड है, दिस साइड कम्स टू 40 डिग्रीज. ओके, टोटल साइड 40 डिग्री आ गई. 40 डिग्री इज इक्वल टू 2400 माइल्स. ओके, सो 2400 माइल्स इज दिस साइड AB. अब इसका जो मिड पॉइंट है, द मिड पॉइंट विल बी एट 1200 माइल्स, 1200 माइल्स. तो 1200 माइल्स जो है, दैट इज, let us say it is at this point, the midpoint. We can call this as point X, and this distance A to X will be 1200 then. So 1200 means AX side would be 20 degrees. So AX side हमें पता चल जाएगी. Now let's join PX. अब आप देखो बेटा, ये जो PAX ट्राइंगल है यहाँ पे, PAX, इसमें हमें क्या क्या चीजें पता है. PA साइड इज नोन टू अस क्योंकि A का लैटिट्यूड पता है. PA इज द कोलैट ऑफ A. AX साइड इज नोन टू अस. हमने टोटल डिस्टेंस निकाला था, मिड पॉइंट है तो जो AX होगा वो उसका हाफ होगा. तो वी नो साइड AX. एंड एंगल A हमने पता किया था फॉर अवर इनिशियल कोर्स. सो दिस इज ऑल्सो नोन टू अस. सो यू सी ट्राइंगल PAX, we have 2 sides and a included angle. So if this is known to us, then we can easily apply the cosine formula. This is one of the conditions where cosine is applicable. So we apply the cosine formula and we easily find out this side, PX side. This PX side gives us the latitude of this point. Because जो PX है वो X का कोलैट होगा. 90 minus PX would be the latitude of this point. जब ये PX साइड हम ढूंढ लेते हैं, अगले आइटम जो फाइंड करेंगे वो होगा एंगल P.
this one. Once you have angle P, this is the D long between A and X. Apply this to the longitude of A and point X is known. So इस क्वेश्चन में भी बेटा वर्टेक्स निकालने की जरूरत नहीं है, स्ट्रेट कोसाइन फॉर्मूला एप्लीकेशन से मिड पॉइंट आ जाएगा। सर इसमें एंगल पी बाइसेक्ट नहीं होगा ना, मतलब वो एप्लीकेशन नहीं लगेगी कि मेरा जो ए और बी का डी लॉन्ग था उसका हाफ नहीं होएगा किसी भी केस में? नो बेटा नो, एंगल पी मिड पॉइंट पे बाइसेक्ट नहीं होगा। सिर्फ एक कंडीशन में ऐसा हो सकता है कि मिड पॉइंट पे एंगल पी भी बाइसेक्ट हो जाए, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वो कंडीशन है अगर ये दोनों पॉइंट ए, let us say this is point A and this is point B. If PAB triangle बनाओगे तो let me make the great circle track. Great circle track would be something like this. अब इसका जो मिड पॉइंट आएगा उस पे एंगल P भी बाइसेक्ट हो जाएगा। तो एंगल P will be bisected at the midpoint in this special case. अगर दोनों A और B एक ही पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड पे सिचुएटेड है, इन दैट केस जो ये ट्राइंगल बनेगी ना PAX एंड PBX, दे विल बी एग्जैक्टली सिमिलर ट्राइंगल। सो मिड पॉइंट भी होगा ये और डी लॉन्ग भी जो है बिल्कुल इक्वल होगा A to X एंड X to B में, बट ओनली इन दिस केस। ओके, एंड तीसरी चीज मैं एक और भी चीज बता देता हूं, इस केस में जो ये पॉइंट X आप निकाल रहे हो ये इसका वर्टेक्स भी होगा। ओके, ये एक स्पेशल केस मैंने बताया, नॉट दैट इट इज रिक्वायर्ड, सिंस आपने डाउट पूछा था कि ऐसा हो सकता है कि मिड पॉइंट पे डी लॉन्ग भी एग्जैक्टली सेम हो जाए दोनों पोजीशन से, या जो डी लॉन्ग है वो भी इक्वली बाइसेक्ट हो जाए। So that is only possible in this particular scenario. सर ये जरूरी तो नहीं है ना कि वर्टेक्स होगा हर बार? बेटा अगर A और B एक ही लैटिट्यूड में हैं तो मिड पॉइंट वर्टेक्स तभी होगा, ओनली देन, अदरवाइज नेवर। ओके सर। ओके ओके, इनफैक्ट अगर आप ये PAB ट्राइंगल जो ये ग्रीन कलर में मैंने बनाई है नीचे, इसको आप समझ जाओ तो बेसिकली यू विल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री। यू विल बी एबल टू विजुअलाइज कि एक्चुअली अर्थ पे ये स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री की लाइंस कैसे दिखाई देती हैं। तो एनीवे, और बताओ बेटा, और डाउट बताओ। सर इसमें तो ये PAX वाला जो ट्राइंगल है जो ऊपर वाला है वो नेपियर रूल से सॉल्व होगा ना? PAX नहीं बेटा, इसमें नेपियर नहीं लगेगा, इसमें कोई भी चीज 90 नहीं है। तो इसमें नॉर्मल वो कोसाइन वाला फॉर्मूला लगेगा ना? यस, इसमें कोसाइन लगेगा। कोसाइन, वी नो कोसाइन इज एप्लीकेबल व्हेन टू साइड एंड इंक्लूडेड एंगल इज नोन। हमें PA साइड पता है, हमें AX साइड पता है और हमें एंगल A पता है। दीज आर थ्री आइटम्स व्हिच आर नोन, सो यूजिंग देम वी विल अप्लाई द कोसाइन। ओके सर। ओके सर जो पिछले वाली स्लाइड थी उसमें तो नेपियर रूल लगेगा ना, जो सेकंड वाली थी? ये वाला बेटा? हाँ सर। इक्वेटर इसमें लगेगा बेटा, बिकॉज इसमें साइड PX जो है ये 90 हो गई है, बिकॉज वी नो दैट दिस रेड कलर लाइन इज द इक्वेटर। ओके सर। ओके, इसमें सेकंड पॉइंट क्या नॉन था सर? PA तो नॉन था सर इस क्वेश्चन में। बेटा एंगल A इसमें हमने फाइंड आउट किया था। we will have to find out angle A in this case. So that is with the PAB triangles है ना सर? Yes, जो नॉर्मल PAB ट्राइंगल हम बनाते हैं ग्रेट सर्कल सेलिंग में, उसमें हम AB डिस्टेंस फाइंड करते हैं, एंगल A और एंगल B फाइंड करते हैं। तो यूजिंग दैट सेम मेथड हम ये एंगल A ढूंढेंगे
एंड फिर इस एंगल ए को यूज करके हम लोग इक्वेटर क्रॉसिंग पॉइंट को फाइंड आउट करेंगे। ओके सर। ओके ओके, सो लुक्स लाइक अभी तक के लिए तो डाउट्स आर सॉर्टेड आउट। एनी मोर डाउट बेटा, और कुछ आ रहा है डाउट माइंड में? ओके, सो लेट्स टेक ए ब्रेक। ब्रेक में भी सोचते रहो इसको, और अगर कोई और डाउट भी आता है तो यू कैन शेयर दैट डाउट विद मी व्हेन वी मीट बैक अगेन, सो वी विल सॉर्ट आउट दैट डाउट। और इसके बाद बेटा आज नेक्स्ट टॉपिक जो आपने मुझे बोला हुआ है, दैट टॉपिक इज स्टार्स suitable for sight and star identification. So let's meet back at 45, then I will tell you. It is a little, it will be a little tricky topic for February batch. February batch candidates have just now joined. तो हो सकता है ये टॉपिक थोड़ा आपको कॉम्प्लिकेटेड लगे, क्योंकि इसमें हम लोग एल्मनैक भी यूज़ करेंगे, बहुत सारे उसमें GHA, LHA, SHA ये सारी चीज़ें यूज़ करेंगे, उसमें रैशनल हॉराइजन डायग्राम भी बनाएंगे, PZX ट्रायंगल भी बनाएंगे। सो आपने अभी अभी ज्वाइन किया है, सो ऑल दीज थिंग्स मे लिटिल ओवरवेलमिंग टू द February बैच, तो बट यू डोंट वरी एट ऑल। आप अभी के लिए अगर इसे सिर्फ सुन भी लोगे, दैट्स एनफ ऑफ द जॉब डन, बिकॉज नेक्स्ट मंथ में, दैट इज 15th मार्च टू 14th अप्रैल वाला जो मंथ आने वाला है, उसमें ये टॉपिक मैं आप लोगों के साथ डिटेल में करवाने वाला हूँ। So the question would arise, why I'm doing it now? I'm doing it for basically the December batch. Okay, December batch candidates will be passing out, so they will not be there after 15th March. So उनके लिए मैं इस चीज को cover up करा रहा हूँ. They had a little doubt, so we will cover this topic. So let's meet back at 45, and we will continue with stars suitable for sight. सर वो आपने बोला था कि आप वो चार्ट वर्क के जो प्रोसीजर है स्टेप बाय स्टेप, तो जैसे फिश ट्रायंगल वगैरह के आप वो नोट्स भेज दोगे सर? भेज दो सर वो, ताकि हम रिवाइज कर लें, नेक्स्ट वीक वो स्टार्ट कर दें। ओके ओके बेटा, नोट्स मेरे अभी चल रहे हैं, कंपाइलेशन में चल रहे हैं, because I have to draw the diagrams and then mark it. But do you have Captain Chaudhary's Chartwrok book? यस सर। तो बेटा रेंडेवू के नोट्स वहाँ पे अच्छे दिए हुए हैं. This topic is covered there quite nicely. So just go through those notes. Meantime, I'll also try. Okay sir, thank you. Okay. Okay, beta. See you back at 45.